हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लॉजिक। आज मैं आप लोगों के लिए एक सेशन लाया हूँ जिसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बिकॉज आई थिंक बिफोर वी स्टार्ट एनी फॉर्मल डिस्कशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनी सब्जेक्ट we need to understand the basics of the constitutional law or that subject. That's why today we are going to discuss about some basics and basic concepts of the constitutional law. तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो वी हैव द फर्स्ट मीनिंग, that is the very first concept is constitution. So let me tell you, constitution is nothing but a document. So now the question arises, what kind of document? So constitution is nothing but a document which has legal sanctity. It means constitution is a legally sanctioned document and which consists of basic governing principles of the state and sets out the framework and the principal functions of the organs of the government of a state. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लीगल सैंक्टिटी होती है और जो स्टेट के गवर्निंग प्रिंसिपल से बना होता है, और ये स्टेट की गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के प्रिंसिपल फंक्शंस को रन करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए एक फ्रेमवर्क सेट आउट करता है. सो दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन. It means the document which has all the rules and regulations to set out the framework for governing, for regulating the principal functions of the organs of the government of a state is known as constitution. Then we have polity. Polity is nothing but the system which has an identifiable political entity or existence. It means which has an identifiable political existence, that system or structure is known as polity. Then we have constitutional law. So now you might be wondering, is there any difference between constitutional law and constitution? So I'd like to tell you, yes, there is a difference. So what kind of difference? So there is difference between the constitution and constitutional law. That is, constitutional law is nothing but the rule which regulates the structure of the principal organs of the government and their relation to one another. It means constitution is the theoretical aspect and constitutional law is the practical aspect of the constitution. It means it is about the application of the provisions of the constitution, whereby an aggrieved party can move to the court for the enforcement of their rights irrespective of fundamental rights or constitutional rights. तो मतलब ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में बात करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में. तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है जिसमें प्रोविजंस होते हैं, और व्हेन इट इज कम्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द प्रोविजंस इट बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. Then we have types of constitution. So we can classify the types of constitution onto two grounds. First one is on the basis of physical form and second one is on the basis of amendment procedure. And let me tell you, on the basis of physical form there are two kinds. First one is written and second one is unwritten. And on the basis of amendment procedure there are two kinds of constitutions, that is rigid and flexible constitution. और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को हम कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन या इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को हम अनइनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन या अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं. तो आइए चलिए इनके बारे में समझते हैं कि व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दिस काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस. सो फर्स्ट वन क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म. सो देयर आर
written constitution and unwritten constitutions. So let me tell you, written constitution is nothing but a single formal document which describes the arrangement of governments in a country. मतलब ये एक सिंगल फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, इसमें सारे प्रोविजंस होते हैं किसी कंट्री और स्टेट की गवर्नेंस के अरेंजमेंट के लिए और उनको डिस्क्राइब करने के लिए। मतलब कैसे किसी कंट्री या स्टेट की गवर्नेंस को रन किया जाए, उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, इससे रिलेटेड लार्जली सारे प्रोविजंस जो सिंगल फॉर्मल डॉक्यूमेंट में होते हैं, दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज रिटन डॉक्यूमेंट और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इनमें प्रोविजंस रिटन फॉर्म में है। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज in every written constitution there must always be the date of enactment. It means every written constitution has to mention about the date of its enactment in its format, in its draft. तो डेट ऑफ इनैक्टमेंट इसके ड्राफ्ट में होनी ज़रूरी है, इट इज़ मैंडेटरी। विदाउट डेट ऑफ इनैक्टमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी नोन एज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड देन वी हैव अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स वाइस वर्सा ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें एक सिंगल डॉक्यूमेंट में सारे प्रोविजंस रिटन फॉर्मेट में नहीं होते हैं। इट मीन्स वी रिक्वायर्ड सम मोर statutes, we require some more traditions, we require some customs to run the governance of the state. So that's why it is known as unwritten constitution. But let me tell you that although we can take example of British constitution as unwritten constitution, although the constitution of UK is unwritten, but there are a number of written statutes there. It means the constitution though is in unwritten form, but the statutes are in the written format, or it evolves over a period of time due to customs, traditions, common law practices. That's why, because it evolves over a period of time, that's why it is also known as evolved constitution. And another names of unwritten constitutions are uncodified constitution and unenacted constitution as well. Then we have, on the basis of amendment procedure, first one is rigid constitution, second one is flexible constitution. So rigid constitution is nothing but the constitution which cannot be amended simply. It means which is very rigid for the sake of its amendment. It means which cannot be amended in the manner in which ordinary laws are passed or amended. It means a special procedure is required for its amendment. It means it can be not be amended by the simple majority of the members of the House. So some special majority of the members of the House is required for the amendment of the constitution, which is known as rigid constitution. And we can take example of USA Constitution, which is not very easy to amend the provisions of the US Constitution. It means a special majority of the House is required always to amend the provisions of US Constitution. That's why it is known as rigid constitution. Then we have flexible constitution. So it is nothing but the vice versa of rigid constitution. It means the procedure of amendment of the constitution is very simple. It can be amended by the simple majority of the House by the simple procedure. It means no special procedure is required for amending the provisions. It means there is no distinction between ordinary law and the constitutional law in case of its amendment procedure, which is very simple. तो इसको सिंपल प्रोसीजर से सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस से हम अमेंड कर सकते हैं. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन. एंड वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ वेरी सिंपल टू अमेंड. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन. आई होप इट इज़ क्लियर. तो अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए. तो तब तक के लिए खुश रहें. ऑल द बेस्ट.